अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इतने दिन आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, उसको और भी आसान कर चुके हैं। जी हाँ, हम लोग नवाब्स किचन का एक ऐप क्रिएट करे थे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग उसको डाउनलोड करिए और भी आसानी से हम लोग के वीडियोस आप फॉलो करिए। आज हम लोग बच्चों के लिए एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, करेले का मसाला करी। कैसे कैसे मसाले हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं, वीडियो फॉलो करिए। आप भी ये मज़ेदार रेसिपी बना के देखिए। चलिए देखते हैं आसानी से नवाब्स किचन के स्टाइल में हम लोग कैसे बनाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले हम लोग मसाला प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए पहले हम लोग ग्राउंडनट, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, सीसम सीड्स और कोकोनट पाउडर, इसके साथ साथ हम लोग ऑनियंस को भी रोस्ट करेंगे। इन सभी को मिला के हम लोग मिक्सी में पाउडर बनाएंगे। उसी पाउडर को हम लोग रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। पहले इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम लोग रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करे हुए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग ब्लेंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। सारे करेले अच्छे तरह कट करे बाद हम लोग इसमें वाटर लेंगे। वाटर में सॉल्ट ऐड करके और टर्मरिक पाउडर भी ऐड करेंगे। इस पानी में ही हम लोग सारे पीसेस डाल के अच्छी तरह वॉश करेंगे।
अब हम लोग रेसिपी का मेन प्रोसेस शुरू करेंगे। बाउल गर्म हो गया है, इसी में ही हम लोग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसी में ही हम लोग मस्टर्ड सीड्स और क्यूमिन सीड्स भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अब इसमें हम लोग मेन इंग्रेडिएंट करेले के पीसेस ऐड करेंगे। करेले पीसेस में जो रॉ स्मेल गए बाद हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालेंगे। स्पाइसीनेस के लिए रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे। टेस्ट के लिहाज से सॉल्ट भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें रोस्ट करा हुआ ऑनियन पेस्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो मसालों का पाउडर है वो इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें टैमरिंड जूस भी ऐड करेंगे। करेले पीसेस को हम लोग इन सारे मसालों में अच्छी तरह पकने के लिए 10 मिनट रखेंगे, जब तक लिड क्लोज करेंगे। अल्लाह। करी पूरी तरह तैयार है। इसमें जो थोड़ा सा कड़वापन रहता है वो हटाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस लाने के लिए गुड़ ऐड करेंगे, जौगरी। फाइनली इसको हम लोग चॉप्ड कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। फाइनली करी हम लोग देखते ही खाने को दिल कर रहा है। देखते ही पता चल रहा है कि कितना मज़े का बना है। इस करी को हम लोग वाइट राइस के साथ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
का रेसिपी देख के आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोग नवाब्स किचन का एक ऐप क्रिएट करे थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ उसको आप लोग डाउनलोड करिए और भी आसानी से आप लोग वीडियोस फॉलो करिए। और एक ख़ास बात, हम तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम पे Nawabs_kitchen 786 पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। नवाब्स किचन को और भी आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट और भी ज़रूरत है, इसलिए जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड करिए और हम लोगों को फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। अल्लाह हाफिज़।